Hey, hi everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So आज का topic जो है that could be very important for the student or the job seekers or the working professional or those who are actively looking for the job change. So this is a very important topic for them. So आज मैं बात करने वाली हूँ resume और CV. So दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन क्योंकि रिक्रूटर जो होता है बिफोर रिक्रूटिंग यू विद इन द इंडस्ट्री और द ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले वो आपका देखते हैं रिज्यूमे सो दैट शुड बी वेरी इम्प्रेसिव बिकॉज दैट्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारे ऐसे अट्रैक्टिव रिज्यूमे के फ्री टेम्पलेट्स जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सेक्शंस अवेलेबल हैं एंड देर आर डिफरेंट डोमेन्स में भी हो सकता है कि आप फार्मा स्टूडेंट हो साइंस स्टूडेंट हो मे बी यू आर अ टीचर फैशन डिज़ाइनर सो बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है जो कि आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो यू डोंट नीड टू पे इवन अ सिंगल अमाउंट ऑफ मनी फॉर क्रिएटिंग योर रिज्यूमे बाय यूजिंग दोज अट्रैक्टिव टेम्पलेट सो वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ एंड साथ ही साथ आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू आई एम ऑल्सो प्रोजेक्ट मैनेजर सो आई नो कि ये चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है जब भी मेरे पास कोई रिज्यूमे आता है सो based upon that I decide whether I need to take that resume further or not so उसके first impression के basis पे मैं वो उस candidate को further select करती हूँ या reject करती हूँ so that's where I thought it's very important to talk about this topic and also since I got to learn about this free templates and websites so that's where I thought it's very important to create this video and this is nothing but again Canva so जी हाँ मैं आपको Canva बताने वाली हूँ कि Canva में कैसे रिज्यूमे के बहुत सारे templates अवेलेबल हैं और जिन्हें यूज़ करके आप बहुत अच्छे और अट्रैक्टिव और इफेक्टिव रिज्यूमे बना सकते हो and the great thing as I mentioned those is free and in addition to that बहुत सारे different domains के अवेलेबल हैं रिज्यूमे और उसके अलावा भी मैंने रिज्यूमे पे एक वीडियो पहले बना रखा है उनके लिए जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है स्टिल वो उन सारे सेक्शंस को करके वो अपना रिज्यूमे बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट माय रिज्यूमे देन प्लीज ऐड योर कमेंट इनटू द कमेंट बॉक्स देन आई विल टॉक अबाउट आई विल शो माय रिज्यूमे एंड टॉक मोर अबाउट माय रिज्यूमे एज वेल एज आई एम वर्किंग इन टॉप MNC so I can tell you how you can make your CV very impressive in order to get the highest paid job in the top MNCs like the Microsoft, Google or Accenture or in the pharma industry like a Novo Nordisk or Takeda, J&J so there are top pharmaceutical companies, top IT companies and also top other MNCs as well जहाँ पे अगर आपको जॉब करना है तो उसके लिए आपका रिज्यूमे जो है बहुत अच्छा होना चाहिए एंड दैट शुड बी वेरी इम्प्रेसिव एंड आपने जो भी वर्क किया है पास्ट में वो बहुत ही इफिशिएंट मैनर में उसमें लिस्टेड होना चाहिए इट्स नॉट लाइक कि आपने जस्ट बहुत सारे पैराग्राफ्स लिख दिए नहीं यू हैव टू शो योर वर्क हाउएवर आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिज्यूमे टेम्पलेट्स का है कि कैनवा पे कौन कौन से रिज्यूमे टेम्पलेट्स अवेलेबल है एंड कैसे आप अपना रिज्यूमे बना सकते हो सो आई एम गोइंग टू टीच यू कि आप अच्छा और इम्प्रेसिव CV कैसे बना सकते हो कैनवा पे सो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको स्टार्टिंग से एंड तक दिखाने वाली हूँ वो सारे टेम्पलेट्स दिखाने वाली हूँ वहाँ पे आप कैसे एडिट करके अपना रिज्यूमे इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हो सो गाइज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा प्लीज डोंट मिस एनी पार्ट क्योंकि मैं हर एक सेक्शन में आपको बताने वाली हूँ कि आपको कहाँ क्या ऐड करना है कैसे एडिट करना है सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन आप जब भी मेरा ये ट्यूटोरियल फुली देख लोगे उसके बाद आप जाके अपनी CV स्क्रैच से बना सकते हो इफ यू वांट टू क्रिएट और इफ यू वांट टू अपग्रेड योर CV और टेम्पलेट्स देन आप कैनवा को यूज करके वो भी बना सकते हो सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट सो लेट्स गेट स्टार्टेड आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप how you can use those templates and which templates are available on Canva and how you can edit and make your CV without even paying a single amount of money and you don't need to hire anybody or you need to pay a good amount of money because जब आप किसी से impressive CV बनवाते हो आपको
2000 3000 या 4000 ऐसे देना पड़ता है। बट आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि आप फ्री में वो चीज़ें कैसे कर सकते हो। सो या गाइज, एंड मैं आपको ये भी बोलूँगी कि इफ़ यू लाइक माई ट्यूटोरियल देन ऑल्सो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब because I'm releasing videos on Canva or high paying jobs or these type of skills, I can say, in every 2 days. So yeah, I mean, let's get started. And please subscribe my channel, and if you like my video, please hit on the like button, and also please add your comment, because this is this gives me motivation to create more videos on these type of important topics. So yeah, let's start. Started. I hope you all can see my screen. So this is the Canva home page, and firstly what you need to do, you can click on the template option, and then you will see there are bunch of templates available. So as the resume is comes under the business part, so you need to hit on this business option, and then you will see there are options available: docs, presentation, whiteboard, business card, flyers, prototype, and there are these are all, I mean, all templates are available under the business. However, our focus for today's is resume. So let's explore the resume part. So once you will click here, so now you need to scroll a bit, and then you can see that how many templates are available. And आप देख सकते हो कि कितने impressive और attractive resume के templates available है. And the good part is these templates are completely free. सी ये जितने भी टेम्पलेट्स है, हाउ प्रोफेशनल दे आर लुकिंग, कितने ज़्यादा प्रोफेशनल टेम्पलेट्स हैं. एंड जब आप ऐसे टेम्पलेट्स अच्छा, आई मीन, रिक्रूटर या एम्प्लॉयर को भेजते हो, सो देयर आर हायर चांसेस दैट यू कैन गेट सेलेक्टेड, ऑल्दो द कंटेंट विच यू मेंशन इन द रिज्यूमे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो डेफिनेटली द जो कंटेंट आप रिज्यूमे में मेंशन करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट या योर रिज्यूमे शुड ऑल्सो बी वेरी इंप्रेसिव, इट शुड लुक वेरी इंप्रेसिव और आई कैची. सो आप देख सकते हो कि ये जो टेम्पलेट्स है, ये कितने आई कैची टेम्पलेट्स अवेलेबल है यहाँ पे. सो मैं आपको दिखा देती हूँ वन बाय वन. जैसे कि आप देख सकते हो, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए. अगर आपको सिंपल चाहिए तो यू कैन आप ऐसा चूज कर सकते हो. इफ़ यू वांट कि आपकी पिक्चर भी रहे और थोड़ा अट्रैक्टिव इंप्रेसिव रहे, तो आप ऐसा देख सकते हो. आई मीन, बेस्ड अपॉन द जॉब फॉर विच यू आर अप्लाइंग, सो यू कैन ऑल्सो create your resume based upon that. Maybe अगर आप infographics या graphic designing के लिए apply करो, so your resume should be थोड़ा graphic designing के format में होना चाहिए. अगर आप simply medical jobs के लिए apply कर रहे हो, then your resume should be look very professional, or I can say in a simple or effective. It's not like कि आपने बहुत ज़्यादा लाल पीला हरा नीला कर दिया है, no. एंड अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो आपका रिज्यूमे उस फॉर्मेट में दिखना चाहिए. सो दैट शुड बी डिपेंड अपॉन द जॉब फॉर विच यू आर अप्लाइंग. सो बेस्ड अपॉन दैट यू कैन चूज द टेम्पलेट. और मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ. सो देयर आर सर्टेन ऑप्शंस और फिल्टर्स आर अवेलेबल हियर. आपको कौन सी स्टाइल में चाहिए, तो आपको मॉडर्न चाहिए, मिनिमल्स चाहिए, सिंपल चाहिए, प्रोफेशनल, एलिगेंट, क्रिएटिव, एस्थेटिक. सो बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज. सो बहुत सारे स्टाइल्स में अवेलेबल है. एंड देन थीम्स भी हैं, जैसे ब्लैक, बिजनेस, पिंक, कॉर्पोरेट, कंपनी, फोटो, इलिस्ट्रेशन. So as I mentioned, based upon your job or requirement, you can choose the template. And feature, so there is also you need a animated or the audio one or the simple simple. So based upon you can choose that part. And also यहाँ पे ऐसे कुछ pro version वाले भी है, which means for pro version you need to pay a certain amount of money, or you should have that pro access. तो आप वो pro वाले एक्सेस कर पाओगे. और अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल है जो कि आप यूज कर सकते हो. और कलर्स के भी ऑप्शन है, आपको कौन से कलर में चाहिए. सो अगर ब्लू में चाहिए, पिंक में चाहिए, या सिंपली ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, सो बेस्ड अपॉन दैट यू कैन चूज द कलर एज वेल. सो अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हो बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल है. जैसे अगर आप प्रोफेशनल पे क्लिक करते हो, सो यू विल ओनली सी ऑल द प्रोफेशनल रिज्यूमे हियर. सो आप देख सकते हो कैसे कैसे फिल्टर्स अवेलेबल है यहाँ पे. और अगर आपको
देन यू कैन ऑल्सो गो बैक, और फिर आप देख सकते हो कि और कौन से है। इन्फोग्राफिक्स में देखना है तो आप यू कैन ऑल्सो चेक द इन्फोग्राफिक्स पार्ट। ये थोड़े उनके लिए है जो ग्राफिक डिजाइनिंग में है, बिकॉज उनकी जो फर्स्ट इंप्रेशन होती है दैट इज हाउ क्रिएटिव दे कैन शो, आई मीन कि उनकी क्रिएटिविटी लेवल क्या है। सो फॉर देम आई थिंक दे कैन यूज दिस इन्फोग्राफिक टेम्पलेट। सो गाइज मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा ये। and to be very honest, like earlier I was also not sure, या फिर पहले कभी मुझे भी लगता था कि मतलब मैं कैसे वर्ड में पहले पूरा डिजाइन करूँ बनाऊँ, या फिर आई मीन व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब एट दैट टाइम आई क्रिएटेड माय रिज्यूमे बाय माई सेल्फ। मैंने खुद से अपना रिज्यूमे डिजाइन किया था। आई नो इट्स नॉट अ easy task. You need to take the simple blank template, and then you need to put your picture, and then you need to fill all the sections. See, now everything is free here, and there are bunch of options available. You can go and choose any template, or also edit those templates. So now I'm showing which type of templates are available over the Canva, and I will also show you step by step how you can edit your part, and then add your picture and download that template. So I will also show you that part. So please don't skip any part in this video. So आप अंत तक बने रहें और step by step चीजों को देखते रहें, because I'm going to tell you everything step by step. So let's get started. So as I mentioned, अगर आपको creative चाहिए, so you can choose the creative one. Then you can also see कि creative वाले जो भी templates हैं, you can see that. See, this one is so much creative. It's looking so creative. So yeah, I mean जो भी चीज़ें आपको जैसे भी resume explore करना है, you can go back and just search. So I would highly suggest, I mean you can go and explore this part, because that's how you learn or we learn. जैसे हम किसी चीज़ को explore करते हैं, हम तभी learn कर पाते हैं। सो या आई मीन आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी मैंने फोटो वाला सर्च किया है, तो इसमें जितने भी रिज्यूम है जिनमें फोटोज अवेलेबल है, वो वाले ही अवेलेबल हो रहे हैं। आप देख सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि कोई भी ऐसा टेम्पलेट है जिसमें फोटो नहीं है, सारे टेम्पलेट्स में फोटो प्रेजेंट है। सो या एंड I'll go back and also show you others as well. So graphic designing. So graphic designing wala bhi we will see. See how how attractive these templates are. And yeah, one thing I would like to mention, where this crown is present, which means this is only accessible to the person जिनके पास pro वाला access है, and this is the paid version. However, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ कोई भी icon नहीं बना है, that is completely free. ये वाला template आप use कर सकते हो अपना resume बनाने के लिए. So yeah, this is about the templates. और this is, I mean ये तो हो गया। और कई बार क्या होता है कि हम हाई स्कूल में होते हैं, या मे बी we want to create resume for the high school student, or the scholarship, or the nursing internship resume, और freelancing के लिए अगर आपको resume create करना है, baby sitting, engineering, teaching. So यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे options available है। like अगर आप fashion designer हो, yoga teacher हो, तो आप जा सकते हो, उसके according templates available है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस थोड़े edits required होंगे, and then you can download that template. तो कितनी अच्छी चीज़ें आप देख सकते हो कि that too is completely free. You don't need to pay amount of money. I mean other than that, अगर आपको pro version पसंद है, then you have to go and buy this pro version, and then आपको थोड़े money pay करने पड़ेंगे. But other than that, अगर आप simple free version के साथ जाना चाहते हो, तो I would personally suggest कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो भी आप यूज करना चाहो अपने रिज्यूमे के लिए। सो व्हाट वी विल डू, विल चूज वन टेम्पलेट, एंड देन बेस्ड अपॉन दैट विल गो एंड एडिट दैट टेम्पलेट। तो मैं आपको एक चूज करती हूँ, देन वो वाला टेम्पलेट मैं आपको एडिट करके बताती हूँ। सो आई चूज दिस वन। सो व्हाट यू नीड टू डू, you need to hit on this button, and then you need to hit on this customize template. And now I'll tell you step by step what you need to do. So let me so yeah, this is the template, and I hope you all can see my screen. So I'll make it better. Yeah, so now I will enlarge this. So यहाँ से आप देख सकते हो, आप zoom in zoom out कर सकते हो. So I'll zoom a bit so that you can clearly see my screen. So if you want to add your picture here, so what you can do, you can simply add your picture. You need to hit on the upload button. अगर आपके picture जो है maybe आपके desktop में available है, then you need to hit here upload option.
and then whichever picture you want to add, you can simply click. So for example, I want to add this picture in my resume, so I'll click here and then hit on the upload part, and now it will be uploaded into my system. And then what I'll do, I'll drag this picture simply here up. So now you can see that my picture is added here, and this is very simple. And for example, you want to edit your contact, so you can simply add 91, simply 9999999. Simply you can edit your template, and then from here you can add your ID. So for me, I'll add limitless Shivangi, and then okay, if you want to keep this in a smaller fashion, then what you can do, you can simply you know maybe you, if you want to what you can do, you can, I'll add some one extra box here. So add a subheading, then I'll make it small, and then here I will add my um email ID here. So maybe that's how I'm going to write, limitless Shivangi @gmail.com. So that's how. And now I need to change the color because it's in the black. So I will, what I'll do, I'll take and then I will minimize the size. Maybe I'll keep it in 6, and then you will see my email ID is added here, limitlessshivangi@gmail.com. And then that's how you can edit this, or you can add your address. So simply you need to delete the address which is already added here, and then you can add maybe Mumbai and whatever the place is, XYZ. So that's how you can edit the templates. And here you can add your name. So I will I mean, what you need to do, maybe I'll write here Shivangi and then Srivastava. So I mean, that, yeah, that's how you can write a name, yeah, write your name here. And then you can also by simply dragging, you can change the place. And then maybe I'm a project manager, so I'll simply write the project manager. you know so that's how you can edit the template. And here you can write the professional profile. For example, you can write I mean, whatever experience you have, and wherever you want to I mean, you are looking for a job. Maybe you want to get a job into the pharmaceutical industry, or you want to get a job into the ID industry. So based upon your requirement, you can edit that part. And it's guys, very simple to edit, as you can see here. So if you want to add more text, so for example, you can add that I am looking for a job in pharmaceutical industry. Okay, so it's a very simple industry. So yeah, that's how you can, let me correct, this is spelling here. So yeah, I'm looking for for job into the and if you want to change the font, so what you need to do, you need to select this here. And maybe you can Canva Sans, Monistrat, or Open Sans. So there are bunch of options available for the if you want to change the font, then yeah, you can change the font. You want to increase the size, so yeah, you need to hit on plus option. You need to decrease the size. You need to decrease, hit on this minus button. Or I mean, yeah, you can do that. And if you want to change the font color, then you can simply change it from here. You need to click here. I mean, you need to hit on the color button, and then you can see that which color is available. And although I would highly suggest since this is a resume, so make it very simple or clear. So yeah, hit on this black option. So that's how. And if you want to make a bullet point, so yeah, that's how you need to select here. Or you want to change the location, so that's how you can change the location as well. So yeah, that's how you add your professional profile. And now coming to the work experience part. So yeah, I mean, maybe you want to edit anything. So for example, April 2023 to June 2020 2023. Yeah. And then you can
add the points here, or if you want to, अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ों को ऐसे पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है, बुलेट पॉइंट्स में करना है, so what you can do, you can simply hit here and then hit here, and then what you can do, you can simply select all the text, and then choose this here, then you will see it will note it into the bullet format. तो कितनी easily आप इस चीज़ को कर सकते हो. And then again, if you want to change the font and all, so you can simply go and change the font, I mean based upon your requirement. So that's how you can change the font. And I mean you can edit this part as well. And you can then edit the business part, or I mean if you want to add any additional part, then you can simply hit here, or maybe write any other language which you want to write, maybe Chinese, or I mean whatever, any other thing which you want to write, you can simply write here. Or any other skills if you want to add, then you can simply hit there and add those skills here. अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ change करनी है location, so you can simply drag and change the location as well, so you'll get more space. So that's how guys, you can choose the template and edit your part. So as you can see that it's a very easy to create. अगर आपको लगता है कि आपका resume 2-3 पेज का है, तो simply what you need to do, you need to add the page here. So simply this page will add. अगर आपको लगता है कि no, you want to delete this page, so you can delete this. Or if you want to duplicate this page, so you can also duplicate this page as well. अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कोई और template add करना है, so you will hit on the design part, and then you can choose the any other design as well. अगर आपको लगता है कि now you want to add this part, then yeah, hit here, so add as a new page. So now you will see this is added as a new page. So yeah, I mean it's very simple to use this template. अगर आपको लगता है कि नहीं, you want to continue with the same template, so yeah, you can duplicate, you can duplicate this template as well. Now you will see कि other page भी यहाँ पे create हो चुका है. तो आप यहाँ से अगर आप अपनी image delete करना चाहते हो, तो you can simply delete the image part. And then अगर आपको लगता है कि you don't want to keep this contact as well, because ये चीज़ें ऊपर already थी, तो you can simply delete this. And बहुत आई मीन जैसे भी आप एडिट करना चाहो, इट्स वेरी इजी टू एडिट. इट्स नॉट लाइक इट्स अ रॉकेट साइंस. आप कैनवा में कुछ भी एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. देन you can just delete this. And if you want to make it above, तो आप इसका लोकेशन चेंज कर सकते हो. आपको और भी सारे वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो. सो गाइस, दैट्स हाउ you can edit the or create the CV into the Canva. So I don't need this second page, so I'll simply delete this. And then once it's ready, you can simply go hit on this button, share. And what you can do, you can hit on the download button. And then I will hit on this download button, as जैसा कि ये बिल्कुल ही फ्री है, so it will simply download into my system. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंपली ये है कि आपको कैनवा में कैसे सीवी बनानी. तो आप देख सकते हो कि कैनवा में आप ऐसे अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स चूज करके अपनी जो सीवी है वो बना सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपको कोई और डिज़ाइन चूज करना है, सो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द अदर रिज्यूमे एज वेल. सो आप देख सकते हो कि ये रिज्यूमे भी है, तो आप ये वाला टेम्पलेट भी चूज कर सकते हो. सो एज इट दिस इज कम्प्लीटली फ्री. सो या जितने भी टेम्पलेट्स फ्री में अवेलेबल है, आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो. या फिर आपको कोई सी भी चीज़ें आपको लगता है कि हाँ चेंज करनी है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस है. आप इन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हो, कलर्स एंड ऑल्स. सो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है गाइस. सो आई वुड हाईली सजेस्ट गो एंड एक्सप्लोर दीज पार्ट्स एंड create the attractive resume for your requirements, or your I mean your resume, so based upon your requirements. So yeah, so this is all about the Canva. आप Canva पे अच्छा रिज्यूमे कैसे बना सकते हो. सो एज आई शोड यू कितना इजी, आप कितने इजी तरीके से कोई सा भी इम्प्रेसिव टेम्पलेट चूज करके एक अच्छा इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हो. सो ऑल्दो आज का जो टॉपिक था वो मेरा रिज्यूमे का था, कि आप
इम्प्रेसिव रिज्यूमे कैसे बनाओ, कहाँ से आपको फ्री टेम्पलेट्स मिल सकते हैं. सो या दिस इज ऑल अबाउट you know about the template and how you can make the effective CV. But in my upcoming video I will talk about which section and how you can write the section for the resume in order to get the highest paid job. या फिर मैं आपको अपना resume का भी example दूंगी. So, although I will not reveal my salary, but yeah, I can say that I'm working in the top MNCs, and टॉप एमएनसीज में जो मैनेजर होते हैं उनका पैकेज जो होता है वो बहुत अच्छा होता है. सो बेस्ड अपॉन दैट आई जस्ट गिव अ आइडिया कि आपको रिज्यूमे में क्या लिखना है या फिर कैसे लिखना है जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सके. सो गाइज, इन द मीन टाइम गो एंड एक्सप्लोर दिस टेम्पलेट्स एंड आप सीवी बनाना सीखो. एंड देन इन माई अपकमिंग वीडियो आई विल टेल यू मोर अबाउट हाउ you can get the highest paid job. In the meantime, if you are a fresher, then you can also watch my video जहाँ पे मैंने बता रखा है कि how you can get a good amount of money or job or internship in the top MNC if you create your CV based upon those points. So freshers के लिए मेरी वीडियो ऑलरेडी क्रिएटेड है जिसका लिंक मैं अपने वीडियो में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो. और जो भी फ्रेशर्स या एक्सपीरियंस जो या फिर जो भी मेरे वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आपको रिज्यूमे बनाना है तो आप ये वाले टेम्पलेट्स जाके एक्सप्लोर कर सकते हो. देन इन माय अपकमिंग वीडियो आई विल टॉक अबाउट हाउ you can write your resume in order to get the highest paid job. And in the meantime, if you like my video, then please hit on the like button and also subscribe my channel. As I mentioned, I am regularly creating content, for the highest paid skills, ID or pharma job, or these type of courses. So yeah, I'm pretty much sure that you'll get benefit, from those videos if you subscribe my channel. So guys, yeah, thank you so much for watching my video. So yeah, bye.